Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are going to complete chapter 15 exercise 15.1. So let's start with the remaining questions. Let's start with question number 6. I have written the question. Refer to table 14.7 chapter 14. There is a table given in chapter 14 which is table 14.7. I have already drawn this table and the table is it's of chapter statistics, chapter number 14, example number 7, table number 14.7 and page number 251 of NCERT book. So the table given is it contains marks and the number of students. Now some of the students they have given their mathematics test and the total number of students are 90. कुछ स्टूडेंट्स ने मैथ्स का टेस्ट दिया 90 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट दिया एंड देयर मार्क्स वर रिटन and the number of students. So this is the frequency which is given. So this includes the students who got 0 to less than 20 marks. So 7 students, 20 to 30. It starts with 20 and less than 30. So number of students are 10. और वो स्टूडेंट्स जिनके 30 से स्टार्ट होके 40 तक मार्क्स आए मीन्स लेस देन 40 आए ऐसे स्टूडेंट्स हैं 10 एंड सो ऑन. So in table 14.7 on page number 251, the question is a teacher observed marks of some students out of 100. These are the marks out of 100 and a frequency table is made जो मैंने already draw कर रखी है. Total number of students given are 90 students. Now the question is find the probability that a student obtain less than 20% in the maths test. Second part, find the probability that a student obtain marks 60 or above. So first of all, we need to find out how many students got less than 20% or less than 20 marks. So if I look at this table, the students who got less than 20 marks, they are 7. Okay, so let's start with the first part. First of all, as you know that we write total number of students. So let's write down total number of students. The total students are 90. Then write down the formula of probability, which is probability of an event. We read it as, you know this very well. Probability of an event is the number of trials in which event has occurred or happened upon total number of trials. Okay. There are two parts. We will write formula only once. There is no need to write down the formula again and again. So first of all, total number of students 90. Then probability formula. And then after that, write down the favorable outcomes. Favorable outcomes, these are the number of students who obtain less than 20% marks in the test. And according to the table, those number of students are 7. So probability of a student getting less than 20%, it is 7 upon 90. Clear? Now the next part is find the probability that a student obtain marks 60 or above. Now the marks should be 60 or more than 60. So if I look at this table, it will include the marks between 60 to 70 and above 70 also, because the question is find the probability that a student obtain marks 60 or above. या तो 60 marks हो या 60 से ज़्यादा, अब उसमें सारे हो जाएंगे. So we will take 60 to 70. The number of students are 15 and more than 70 also will be included. So that is 8. So for this you need to add 15 and 8. So write down the number of students who obtained marks 60 or above. So show this addition. 15 plus 8, which is 23. So right after this P, we read it as probability of the marks 60 or above, or the probability that a student gets 60 or above marks. There are so many ways. If you do not want to write in this way, you can also write required probability. So that is 23 by 90. I hope this question is clear. The questions of this chapter, they are really very easy. So let's move to question number 7.
Now the question number 7 is to know the opinion of the students about the subject statistics. A survey of 200 students was conducted. एक सर्वे किया गया जिसमें स्टूडेंट से पूछा गया कि whether they like statistics or not. The data is recorded in the following table, and the data is recorded in the form of a table. Opinion, whether a student likes it or dislike it. Number of students 135 and 65. Now the question is, find the probability that a student chosen at random likes statistics, and the second part is does not like statistics. The answer is very easy. We know that the number of students who like statistics, they are 135 and the total students are 200. So it becomes 135 by 200. Same for the second part, a student who dislike it or does not like it, it is 65 upon 200. Now how to write down this? For the solution you need to write down first of all total number of students, the total students who were surveyed, that is 200. Then the formula for probability, please make it a habit of writing the formula at least once in the question. If there are 2 or 3 parts, no need to write down the formula in the question again and again, just write it once at the top. So write down the formula of probability, that is number of trials in which event has occurred or happened upon total number of trials. After that write down for the first part. पहले part में हमें बताना है वो students जिनको stat पसंद है, statistics पसंद है. So write down the number of students who like statistics, they are 135 in number. So the probability that a student likes statistics is 135 by 200. Cancel this, 5 के table पे cancel कर दो, you will get 27 by 40 as the answer. You can also convert this into decimal form. Now the second part is number of students who do not like statistics, that is given in the table 65. So write down that number as 65 and then write probability. A student does not like statistics. You can also write required probability. So it is equal to 65 by 200. 5 के टेबल पे फिर से कैंसिल कर दो and you will get the answer as 13 upon 40. Clear? Now let's move to question number 8. Now question number 8 is refer to question 2, exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives? Now first of all let's check what is question number 2 of exercise 14.2. Question number 2 of exercise 14.2, it is given on page number 245. I have written the question. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. Residence means जहाँ वो रहते हैं, place of work उनका ऑफिस या उनकी कंपनी. तो 40 इंजीनियर्स के घर का और उनकी कंपनी का जो डिस्टेंस है वो मेजर किया गया एंड इट इज़ रिकॉर्डेड. आई हैव written the distances of 40 engineers from their residence to their place of work. The first one is having or living at a distance of 5 kilometer, then 3, then 10, 20, 25 and so on. So I have written all the distances. ओके तो ये 40 एंट्रीज मैंने इसमें लिखी हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो है डिस्टेंस 40 इंजीनियर्स का उनके घर और कंपनी के बीच. अब मैंने कुछ सर्कल किए हैं, वो क्यों किए हैं अभी बताती हूँ. लेट्स रीड फर्स्ट पार्ट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क. हमें बताना है प्रोबेबिलिटी उन इंजीनियर्स की जिनके घर और जिनके कंपनी या ऑफिस का डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर है. सो लेट्स फाइंड आउट दैट. आई हैव ऑलरेडी सर्कल्ड दोज नंबर्स विच आर लेस देन 7. जो नंबर 7 से लेस हैं ऑलरेडी मैंने सर्कल कर रखे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट नंबर लेस देन 7, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ and 9. Okay, you can also check from the table which is given in your book on page number 245. So the numbers which are less than 7, in this we are not going to include 7 because it is mentioned that it should be less than 7. So there are 9 entries which are less than 7.
So we will start by writing total number of engineers 40. Then the formula of probability you need to write. Okay, then first part is number of engineers living at a distance of less than 7 kilometer from their place of work. I have written that number as 9. So find the probability. Probability, we read it as probability that the distance is less than 7 kilometer. So it is this number 9 upon total 40. So the answer comes out to be 9 upon 40. Now the second part is more than or equal to 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क. या तो 7 हो या 7 से ज़्यादा. देर आर सो मैनी, देर आर 2 वेज नाउ टू फाइंड आउट दिस. पहला कि हम वो सारे नंबर्स काउंट करें जो या तो 7 हैं या 7 से ज़्यादा हैं. दूसरा, हमने जो 7 से लेस नंबर्स फाइंड आउट किए हैं उसको टोटल में से माइनस कर दें. So it is easy to subtract these 9 entries from total number of entries. The total entries are 40 entries. Okay, so 40 में से 9 entries less हो गई तो रह गया 31. So answer अब आपको पता लग चुका है. So the way of writing is number of engineers living at a distance of more than or equal to 7 kilometer from place of work is 40 minus 9, that is 31. So the probability that an engineer lives in more than or equal to 7 kilometer, it is 31 by 40. Clear? Now the next part is within half kilometer from her place of work. जो डिस्टेंस है उनके ऑफिस का और घर का, रेजिडेंस का, वो हाफ किलोमीटर के एरिया में आए. विद इन हाफ किलोमीटर मीन्स हाफ भी हो सकता है और उससे लेस भी. इफ़ आई कन्वर्ट हाफ इनटू डेसिमल्स, अगर मैं हाफ को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 0.5. तो इसका मतलब मुझे वो नंबर ढूंढने हैं या तो जो 0.5 हो या उससे छोटे हों. सो इफ़ आई लुक एट ऑल दीज 40 एंट्रीज, अगर मैं इन सबको देखती हूँ तो कोई भी 0.5 नहीं है और ना ही उससे छोटा है. सो देयर इज़ नो एंट्री which is less than or equal to 0.5. So for this we will write number of engineers living within a distance of half kilometer from place of work is 0. तो ऐसे कोई इंजीनियर है ही नहीं. So probability of living within half kilometer is 0 by 40. So which means 0. And you know that if the probability is 0, it is called an impossible event. So this is an impossible event. ठीक है, लिखना बहुत अच्छे से है. द मैथड इज राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, देन राइट डाउन द फॉर्मूला, देन स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, देन मूव टू सेकेंड पार्ट एंड देन टू द थर्ड पार्ट. सो 8th क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and 10, these are the activities. So we are not doing these activities. So let's start now question number 11. Activities will be done later on after the completion of this chapter. Activities अलग से करेंगे 9th or 10th. So let's move to question 11. I have written the question. 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weights of flour in kilogram. बेटा आटे की थैलियाँ हैं, आटे की थैली लाते हो ना मार्केट से. So there are bags of wheat flour and there are 11 bags of wheat flour जिनके ऊपर marked है 5 kg, but actual measurement is not 5 kg in all the bags. It is written, ये actual measurement है 4.97 किलोग्राम, 5.05 किलोग्राम, 5.08 किलोग्राम and so on. Okay, मैंने ये नंबर सर्कल क्यों किया अभी आपको समझ आएगा. Now the question is find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. हमें उस बैग की probability बतानी है जिसमें 5 kg से ज़्यादा फ्लोर है. So I have circled all those numbers which are more than 5 kg. So if you look at these entries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there are 7 entries which are more than 5 kg. ओके, तो आंसर तो मिल गया. 7 अपॉन टोटल है 11, तो 7 अपॉन 11. नाउ हाउ टू राइट डाउन दिस. द वे ऑफ राइटिंग इज you will write total number of bags 11, number of bags containing more than 5 kg of flour 7,
Then the formula of probability that you already know, number of trials in which event has happened upon total number of trial. Then P, more than 5 kg of flour, or you can write required probability. जब समझ ना आए तो required लिख दो. required means जो हमें चाहिए वो हम निकाल रहे हैं. required probability that is 7/11. so this is the answer. very easy question. और बहुत केयरफुली देखना है कि क्या पूछा गया है. इक्वल टू 5 है, मोर देन 5 है, लेस देन 5 है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द बुक. मैं उसे रीड कर रही हूँ. द क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 दैट आई हैव रिटन हियर. एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5 which is given on page 245 and 246. Now the question states that you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days. क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 का जो किया था उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर सिटी में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी थी 30 डेज की. ठीक है, और उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनवाई गई थी. अब ये टेबल आपकी अगर क्वेश्चन देखना है तो ये इन दोनों पेजेस पे है, और अगर आपको टेबल रेडीमेड चाहिए तो पेज 344 पे आपकी गिवन है, जो मैंने टेबल यहाँ ड्रॉ की है. ये टेबल क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन, और ये फ्रीक्वेंसी है कि कंसंट्रेशन अगर 0.00 से 0.04 तक है तो ये 4 दिन थी. इफ़ इट लाइज बिटवीन 0.04 टू लेस देन 0.08, यहाँ इससे लेस नंबर लिया जाता है और ये सेम नंबर नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट रो के अंदर. ठीक है, तो 0.04 से लेस देन 0.08 ये 9 डेज तक थी कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड की. एंड इन द सेम वे द रिमेनिंग एंट्रीज हैव बीन रिटन. और टोटल नंबर ऑफ डेज हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में 30 डेज. ओके, तो 30 डेज तक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व की गई और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना. अब क्वेश्चन स्टेट कर रहा है यूजिंग दिस टेबल. क्वेश्चन में क्या पूछा? यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16. इस इंटरवल में, ठीक है, तो अगर ये इंटरवल लेना है तो ये कितने डेज तक था? 2 डेज. टोटल नंबर ऑफ डेज 30. तो आंसर तो आ गया. प्रोबेबिलिटी इज 2/30. नाउ हाउ टू राइट डाउन दिस? द मेथड ऑफ राइटिंग इज वी राइट डाउन द नंबर ऑफ डेज. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन number of days for which the concentration of sulfur dioxide was in the interval of 0.12 to 0.16. it is 2. total number of days 30. जिसको मर्जी पहले लिख दो, जिसको मर्जी बाद में लिख दो. then the formula of probability that you already know, and then required probability, or you can write P within the bracket. You can also write in this way, P 0.12 to 0.16. you can write in any way. it is equal to 2/30. cancel कर दो, you will get 1/15. so you got the answer. आंसर निकालना बहुत ईजी है. सिर्फ एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. वहाँ से या तो टेबुलर फॉर्म से आप कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो, या जो डेटा गिवन है वहाँ से काउंट कर लो कि कितनी बार वो इन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है. ओके, now let's move to the last question of this exercise, which is question number 13. Question 13 is, I am reading this question for you. In question 1 of exercise 14.2, I have written here question 1 of 14.2. क्या था question? You were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. आपको एक डेटा दिया था जिसमें ब्लड ग्रुप दिए थे 30 स्टूडेंट्स के. आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द ब्लड ग्रुप्स हेयर. मैंने ये सारे के सारे लिख दिए हैं.
Use this table to determine the probability that a student in the class selected at random has blood group AB. हमें उसकी probability निकालनी है कि student का blood group हो AB. अब ये दो तरह से आप देख सकते हो. पहला इस डेटा में से निकाल लो. अगर मैं एंट्रीज की बात करूं तो ये एंट्री एक AB की है, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, तो 3 आ गई. और अगर मुझे यहाँ से नहीं देखना तो आपको टेबल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन पेज नंबर 243. तो आप वहाँ से डायरेक्ट टेबल भी देख सकते हो. इट्स अप टू यू. दिस इज द टेबल गिवन. ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड AB इज 3 एंड द टोटल इज 30. नाउ प्रोबेबिलिटी तो आ गई. आई नो AB आपने देख लिया 3 है, टोटल 30 है, तो 3/30 कैंसिल आउट करके 1/10. नाउ हाउ टू राइट डाउन दिस? द वे ऑफ राइटिंग इज either you can write total at the first, or I have written here number of students having blood group AB, those are 3, then total number of students 30, then probability of event, we read it as probability of an event is equal to number of trials in which event has happened. ये same आपकी favorable outcomes होते हैं जो आपने 8th में किए थे, upon total number of trials. So then either write required probability or probability that the blood group is AB. It is 3/30, so it comes out to be 1/10. Okay, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1/10. So we have completed all the questions of this exercise. Okay, so we have done up to 13 question. Please try this question once more. It's really an easy chapter. That's all for today. Bye bye.